Namaskaram. I think, Sadhguru, you've already started with a beautiful poem. I got in the middle of it. So let me read it to you again full. Yes, you have already set the mood. It is about my little finger, not a big subject. My little finger, it's called. Enough of this false poetry. I break my pen to see that none of it ever spills upon paper. But the green leaf sings its green poems, and the brown one, about to lose its perch upon the tree, murmurs its own. The bird upon the tree sets music to its own kind. The insects are ardent singers of their own bardery, and even the toads echo their grave verse. My heart has a mind of its own and sings away against my resolve. Now can my little finger be left behind? The musicians there, and towards the end of our discussion, if they can try, not forcing them. If they want to try till the very end of our discussion. Oh, are we talking for 3 days, Prasoon? No, we are talking about yes, whatever time. I know they are magical. I've heard them before. So I will, Sadhguru, a very fresh piece which dedicating to today's evening, I am reciting that and handing it over to the musicians there, and we see if towards the end of the program we can hear something from them. This is a little small piece, a few verses, and it is talking about what is happening to us today. सुनो, कुछ देर ठहर कर सुनो, सुनो, कुछ देर ठहर कर सुनो, कुछ कहना चाह रही है हवा, कुछ कहना चाह रही है हवा, कुछ सन्नाटे भी बोल रहे, कुछ सत्य गगन से उतरे हैं, जो बंद द्वार हैं खोल रहे। Should I say वाह वाह वाह? कहना चाह रही है हवा, कुछ सन्नाटे भी बोल रहे, कुछ सत्य गगन से उतरे हैं, जो बंद द्वार हैं खोल रहे। बुनो एक जीवन फिर से बुनो, सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो। अपनी गहराई में कूदो, अपनी गहराई में कूदो, सच्चे सिक्के मिल जाएंगे। अपनी लहरों से बात करो, सब उत्तर भी मिल जाएंगे। अपनी गहराई में कूदो, सच्चे सिक्के मिल जाएंगे। अपनी लहरों से बात करो, सब उत्तर भी मिल जाएंगे। चुनो चुनो खुद अपना रास्ता चुनो, सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो,
थी कब से मौन सृष्टि सारी, थी कब से मौन सृष्टि सारी, मिट्टी की गंध को कहने दो, अब मुक्त करो तुम स्वर सारे, हर रुके छंद को बहने दो। सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो। I'm reading it for the first time. I finished it last evening and dedicating to the evening today. And I hope we hear something from Sounds of Isha towards the end of the program. We'll have to keep on talking till they get it ready, Prasoon. We will. I have more confidence than seems Sadhguru than you. But they are wonderful. Sadhguru, to set today's mood, and you started the poem already. What I've been noticing, a lot of people have been doing a lot of work in our fraternity also. A lot of artists have been coming out, and I've been speaking to my fellow musicians and poets and other artists also. And there are two kinds of creative work which is emerging out of these times. One is born out of tension, which I have always considered an integral part of creativity. It's like, without tension, even a sitar does not give you the right sound. It has to have the tension, the right tension in the wires to be able to give you the music. If it's loose, it doesn't give you that sound. So that one work is coming out of tension, and which has got anxiety, which has got tension built in. And another kind of work which has been coming out is kind of a self-expression, self-exploration kind of work which is coming out. So Sadhguru, you've been writing poetry, you've been doing paintings. To those paintings I'll come a little later. But what is your inspiration, Sadhguru, when you are writing, you are creating? What kind of mindset you have when you are, exploring thoughts? Oh. Now I'm asking Sadhguru is not a spiritual leader. I'm asking Sadhguru as a poet and artist right now. I don't definitely come out of tension, nor is it a… Let us first understand कि सबसे पहला बात ये हो रहा है कि मुझे भी ऐसा लगता था कि ये इतना बढ़िया डांस कैसे कर ले रहा है, तो 4 साल का लड़का है ये। और दूसरे हिसाब में अरे भाई ये तो गिटार बजा रहा है। अभी हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या नाम है, लीडियन है ना, लीडियन पियानिस्ट, जो अमेरिका गॉट टैलेंट में वो 2 हाथों से पियानो बजाता है। वो 7-8 साल का लड़का है। हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो बजा डाल दिया इसने। हाँ, जुरासिक पार्क का एक तरफ खेला, एक तरफ मिशन इम्पॉसिबल का पियानो बजा रहा है। भाई हम तो टाइटैनिक का म्यूज़िक नहीं बजा सक रहे ठीक से, कितना सीखने के बाद। ये लड़का कैसे इतना जल्दी सब कुछ कर ले रहा है? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पनप बहुत बार पनपता था। मुझे लग रहा है कि भगवान अनफेयर है और किसी को इतना दिए हैं कि वो इतना जल्दी सब कुछ कर सकता है। कोई मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया कर सकता है, कोई ये बहुत बढ़िया कर सकता है, कोई राइटिंग बढ़िया, कोई पेंटिंग इतना बढ़िया करता है, बाप रे। और मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मुझे क्या गिफ्ट है भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ना पेंटिंग कर सकते हैं, ना राइटिंग बढ़िया है, ना ड्राइंग कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अटेंशन डिफिसिट ही रहा होगा, क्योंकि मैंने किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत जगल कर रहा था कि क्यों भगवान क्यों अनफेयर है, वाई ही इज़ अनफेयर गिविंग समवन सो मच ऑफ टैलेंट्स एंड सम विथ नथिंग। तो मुझे ये हर समय लगता था कि ये by birth, I always thought that this is by birth. Okay, जैसे अभी प्रसून जोशी है, वो एक पोइट, ठीक है। तो पोइट, इनका पोइटिकल आइडियाज ये इनबॉर्न था क्या? पिछले जन्म का ये है नॉलेज, पिछले जन्म का टेंडेंसी। मैं हर समय इसको इस तरह से कंक्लूड किया था, लेकिन अब देखते हैं इसको कैसे आंसर करते हैं सदगुरु, और उसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं इसको।
self-expression of any kind. This will… maybe what I say will be little, what to say, off-key, or maybe even sounds little stupid, or maybe if you look at it from another side, it may look a bit arrogant probably. But the reality for me is whether… now you said not as a spiritual leader but this, but whether it is whatever spiritual work we're doing or poetry or this artwork, don't tell anybody, I'm just pretending to be one. Suddenly I decided I will paint something. I've painted many things in my mind, but never painted with my hand. So I just started doing something because there was time and there was paint. So, this may sound a little strange or people may even think I'm trying to dodge the question, but I am not. Let me try to find some kind of expression to this. When it comes to poetry, I'm like… it's like when I write it, I don't even read it the second time and fix a few words or nothing. I just write it and that's it. I will just send it to the office, they will print it and then send it back just to check if typos are there, that's about it. I don't think and I don't write, I don't think of a particular concept, nothing. In some way, it's like I drip poetry a bit. That same thing may be in some form becoming some kind of a painting which I don't think it's much of a painting, but people are saying it's good, people are buying it for a very good price, so Yes, I heard something. that's their generosity, not my artwork. So whether I'm speaking or writing, painting or doing many other things, or I will put all these under the same category. When I drive, when I ride, when I teach, when I write or paint or whatever, for me it's just about the same thing. Something of me just finds… expression is not the word, because if you want to express, you must have some thought or some idea or some philosophy or ideology. It's like I drip these things, it's more of a drip than an expression. Well, sometimes if the situation… not me, I'm always willing. If the situation is willing, I will become a torrent, otherwise I will drip. Yeah, Sadhguru, for you, what I will, of course you are humble, so you will not say that, but people, if you are connected, I had written a number of times about being Zariya, तू जरिया मैं जरिया उसकी कृपा दरिया दरिया. The question… Please tell me in English, huh? What is it? So, sir, the question is that… the thing is that you are not the electricity, you are the wire. And the electricity passes through you and you become by accident an artist. That's how I have expressed a number of times. I felt also that where did the thought come from? Sometimes you just feel that you are lucky that the thought happened to you. And so Sadhguru, one hand it is about being a medium or being expressing a medium, but where does then the craft come? Is creativity inborn? And we often hear that everybody is creative. What is your Sadhguru take on that? Or is everybody creative to begin with? But then we see some people create better, some people create well, some people pursue that. Is creativity inborn or is inculcated or is nurtured? I feel what we are looking at as creativity, whether it is poetry or painting or various other kinds, whether acting or whatever it is essentially coming from a keenness of attention. Certain people are very attentive to sounds and words and meanings, so they, bounce back certain things. Certain people are very attentive to forms, colors,
they will find expression in a different way. Certain people are very attentive to sounds, they may become, may be able to produce music very effortlessly, able to create those things. It is a question of attention. How keen and profound is your attention? That reflects in you in some way. So, a sense of what I've been trying to do, I'm using the word trying to do intentionally because I'm still trying to do, is to get millions of people to become really attentive. Attention without intention, simply. Intense attention, without any intention, not towards anything, simply attentive. If this one thing people do, every human being will be able to be very multi-dimensional. Creativity is very much possible. It's not that they have to practice, they have to do this or that. What… So the myth is busted now, ठीक है। अभी तक हम लोग को ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक पियानो बजा सकता हूँ, ये पॉसिबल, मुझे हर समय ऐसा लगता था कि ये मेरे गिफ्टेड ही नहीं है। तो जब मुझे ऐसा लगता है तो मैं ये कर भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। इसमें क्या कमी था? मेरा अटेंशन का कमी था। अगर मैं ठीक से ध्यान दूंगा ना तो मैं बजा सकता हूँ उसको। गुरुजी ने एक एनालॉजी में बताया था कि वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, वो हर समय जो भी गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है, बस चलाता है, वो ड्राइवर को बहुत अटेंटिवली उसको ऑब्जर्व करते थे, बहुत ही ध्यान से देखते थे उसको। एक दिन जंगल में जब वो लोग जा रहे थे किसी टूर के लिए, तो वो जो ड्राइवर था वो बीमार हो जाता है और बाकी गाड़ी में किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता। और गुरुजी ने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाया, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते हम लोग, है ना, लेकिन इनका ध्यान 100% इनको क्लैरिटी इतना था कि ये उसको कर सकते हैं बोल के इनको पता था, क्योंकि उनको सब डिटेल पता था कि किस तरह से क्या दबाना है, क्या ऑन करना है, किस तरह से ये करना है। हम लोग जानते हैं आस्ते आस्ते क्लच छोड़ते, उसके बाद एक्सेलेटर दे के आगे बढ़ाते। पुराना वाला गाड़ी सब ऐसे ही होते थे। तो इस हिसाब से उन्होंने जो बाकी का जर्नी था उसको कवर किया, ठीक है। तो वो अटेंशन की वजह से, अगर मैं ठीक से ध्यान नहीं देता, जैसे अगर मैं गाड़ी भी सीखने जा रहा हूँ ना, तो कोच क्या बोल रहा है उसको मैं ठीक से ध्यान नहीं देता हूँ तो सीखने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? एक आदमी को सीखने में बहुत टाइम, एक आदमी को जल्दी से सीख जाता है और किसी किसी चीज़ में उसका एक प्रिडिलेक्शन रहता है। जैसे कि अभी जो बताएंगे, किसी को ड्राइंग में रहता है तो वो ड्राइंग का सामान जल्दी कैप्चर कर देता है और उसको पोर्ट्रे करता है। लेकिन जो नॉन ड्राइंग है, अगर वो भी ध्यान देना ठीक से तो वो सीख जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेचर ने कोई लिमिटेशन छाप के नहीं भेजा हम लोगों को, बस हम लोग का ये गलत फहमी को दूर किया जा रहा है। बस यही मेरा मेन मोटिव था। और उसकी वजह से मुझे लगता था कि अपने आप लोग सब लोग क्या करते हैं, हम लोग माइंड ब्लॉक बना देते हैं। हम लोग लगता है कि अरे भाई मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, कभी मैथमेटिक्स तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, अंग्रेजी तो बोल नहीं पाऊँगा। तो ये एक माइंड ब्लॉक बना के आपको लिमिटेड बना देता है। अगर आप गुरु जी को देखें, वो पोएट्री नहीं, किताब लिखना नहीं, इन्वायरमेंट नहीं, ड्राइंग नहीं, क्या क्या करते हैं, ठीक है। हालांकि इनका ज़्यादा प्रेडिलेक्शन कॉन्सेक्रेशन में है, लेकिन फिर भी इन्होंने सब चीज़ पे अटेंशन दिया। देखिए वो ड्राइंग में अटेंशन देने की वजह से ड्राइंग काफ़ी अच्छा ही बना था। जो हाथी वगैरह का बना था ड्राइंग, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें करोड़ों रुपए से मिले। तो वो पैसा का थोड़ी ना घर में बैठ के खाना है। उस समय जब पेंडेमिक के टाइम का ये सिनारियो है, और उस समय जब आदमी लोगों का खाना नहीं हो रहा था, पैसा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने यही उपाय लगाया, ठीक है। इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जितना पैसा, अगर पैसा रख के भी क्या करेंगे, सब इधर उधर इन्वेस्ट, सब इधर उधर दे के, मैंने गरीब लोगों का मदद करने। सो रूरल रीजनों में ज़्यादा मैंने खुद जाके जो देखा है उससे मुझे ये पता लगा, लोकल आदमी किस तरह से बोल रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, वीडियो मीडिया देख के नहीं। What is lacking in human being is attention. So what is taking away human attention is simply their own cerebral activity. People do not know how to handle their memory and their attention separately. Their memory always floods into their attention and clouds it all the time. This memory, this clouding of the memory, people may call as thought or emotion or whatever else they like to, but essentially it is the accumulated memory which interferes with one's attention. Otherwise, it is very natural
for you to be attentive. When you're awake, you're attentive. How else can you be? It is only… अब ये बात इतना सही है, देखिए ये बात इसलिए इतना सही है क्योंकि आपने सुना होगा कि आप बूढ़े हो गए, आप ध्यान नहीं दे सकते हो, आप बूढ़े हो गए, आपको बहुत टाइम लगेगा सीखने में, बच्चा है तो जल्दी सीख जाएगा। ये क्यों होता है? जितना आप एज होता जाता है ना, आप उतना मेमोरी से क्लटर हो जाते हैं, आपका अटेंशन उतना ही वीक होता है। लेकिन अब गुरुजी को बोल दिया, कहते कहता है कोई भी एक नया टास्क हो, हेलीकॉप्टर चलाना मान लीजिए, वो बच्चों की तरह ही सीख जाएगा क्योंकि उनका अटेंशन मेमोरी से क्लटर नहीं है। तो मैंने आस्ते आस्ते ये रियलाइज़ किया कि जब हम लोग का अटेंशन आस्ते आस्ते कीन होता है ना, तो जिस चीज़ को हम लोग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक समझते थे वो एक्चुअली उतना प्रॉब्लमेटिक होता भी नहीं है, बस ध्यान की कमी है। तो यही मेन चीज़ है। तो ये काफ़ी सही है और हम लोगों को भी इसी फोकस में जाना चाहिए कि इस तरह से हम लोग अटेंशन इतना कीन बनाने, जिस तरह का इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट है उस तरह से अपने आप को हम लोग मोल्ड कर सकें। यही सबसे बड़ा चीज़ है ह्यूमन नेचर का, कि आप जो चाहते हैं, आपको जो पसंद है वही आप कर सकेंगे बोल के ऐसा लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ है। इसी चीज़ को तोड़ना है और किस तरह से एक आदमी पुरुष से महापुरुष बन सकता है। ठीक है। Only because memory seeps into every aspect. So, this is the fundamental work that I've always been trying to do, that people should be able to separate their memory, their attention and their imagination. Imagination is not a problem because imagination is an extrapolation of one's memory in many different ways. So, this simple aspect of life, that… see, all the animals are very keen attention, but they don't have a vivid sense of memory as we have. They have some memory, but not the kind of memory that human beings have. It's very vivid. Like as we saw it, we can remember, we can replay that whole thing, we can experience things that have happened 10 years ago, 25 years ago. Now instead of using this memory as a phenomenal capability, most people use this to cause misery to themselves. What is it that human beings are suffering? Most of the time they're suffering what happened 10 years ago. And they may be also suffering what may happen day after tomorrow. Right now these times are like that. People are already suffering what is yet to happen. Sadhguru, very well said. Sadhguru, but so you're saying memory and and you talked about animals who are in a complete state of bliss. देखिए गुरुजी जो बोल रहे हैं ना, क्यों 99% आदमी लोगों को समझ में नहीं आता है। वो लोग सुन सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डेप्थ में समझना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि कुछ हद तक उन लोगों की लाइफ में ये एक्सपीरियंसली ट्रू नहीं है। अगर जो बोल रहे हैं, अगर आप गुरुजी जो बोल रहे हैं आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंसली उसका हो जाएगा, जैसे इनर इंजीनियरिंग जो करते हैं, सुनिया जो करते हैं, या फिर मेडिटेशन जो करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा ये क्या बोल रहे हैं। चाहे वो कम पढ़े हो, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा समझ में इसलिए आएगा क्योंकि कुछ हद तक उन लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस में जो गुरुजी कह रहे हैं वो सच हुआ, सच साबित हो रहा है। ऐसे नहीं मिलियन फॉलोअर बन जाएंगे ना। फॉलोअर का मतलब ये कि उन लोगों ने लाइफ में कुछ सच देखा है या फिर कुछ सच को एक्सपीरियंस किया है ना, और ये बढ़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि कम होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ का। ठीक है। Out there. No, I did not say they are in bliss. No, they have their struggles, but they are not suffering their memory, they are suffering life. Human beings are just suffering memory most of the time. So where does the creative idea… see, the desire to self-express, where is it born? Is it born out of a certain restlessness inside or certain anxiety? Because otherwise, why do I want to express myself? What is the need in it basically? And especially Sadhguru in these times, as you said, people are turbulent, and I have seen a lot of expression coming out. If you see social media, and a lot of work has been coming out. All kinds of anxiety has been showing there. I'm not saying there anxiety in work, but definitely great pieces of work also coming out. And one heard that in the times of somebody said that in the plague times Shakespeare
went on to write a lot of stuff, and a lot of art has been born. If you look at Dadaism, which was after the World War, they started saying that why should art be special, and everything which is ordinary is art. So hence there is no art. So a lot of these questions happen when turbulent times comes. So is it important for creativity to have like a lake being shaken, or the calmness has been shaken? Is it important for creative work or ideas or poetry or music, an expression to come out of some sort of turbulence or anxiety? See, Prasoon, this needs to be explored in a certain way. The problem with most human beings is, unless you put a pin into them, they will be half alive most of the time. Inertia is a choice that people have taken too. Because of inertia, nothing may be happening. So if you sit on a sofa, you become half alive. But suppose somebody put a pin there, the moment you sit there, you will become fully alive. So, some people who are in that state, whenever threat comes, a war comes, or a pandemic comes, or something else comes, or in their own life some tragedy comes, then they will become concerned about life. It's an unfortunate way to be. You must have this concern every moment of your life. Concern is because of involvement, not because of being instigated by some situation. When your concern comes out of instigation of some terrible thing that is happening right now, or it's impending right now, that is not the way. This is why I said attention. What is lacking is simple attention. We know life only to the extent we're attentive to it. What is the depth of your attention? Only to that extent do you experience life. If your attention is very profound, your experience of life is very profound. When your experience of life is very profound, will you definitely express it? Not necessarily. It may find expression in just the simple work that you're doing, it may find expression in poetry, music, whatever. That depends on things. About Shakespeare creating King Lear when plague was on, Alexander Pushkin doing something else when he was in quarantine, well, that's because of time. As I'm painting, I've become a painter now not because I want to express something, simply because there is time. Otherwise, I would be too busy to pick up a brush and do something. So, essentially, if the richness of experience is happening within you, it is always possible to find expression in some way. What kind of expression you will find simply depends upon what sort of attention do you have. Is your attention simply there for everything? Is it like a simple light bulb, if you turn it on, light bulb falls on everything? Is that kind of attention you have developed, or you attend to only certain types? As I said earlier, somebody is paying attention only to the sound. So when hard times come, unknowingly they may start creating music. Somebody is paying attention to only colors or forms, they may start becoming painting. Or somebody is paying attention to their thought process, they may start writing poetry or prose or whatever. So essentially, most people can pay attention only to a certain thing that they think is of interest. To be able to pay attention to anything without discriminating what is of interest, what is not of interest, what is worth your attention, what is not worth your attention, this is a wrong way to look at life, because right now the virus, see what a right now I'm going to become extremely unpopular. Just see what a phenomenal thing it is, an invisible damn thing can make the whole humanity go down on its knees. So, the source of creation did not pay any less attention to creating a virus than creating a human being, obviously. So brilliant it is, we have no clue what to do with it. All our science, all our medical science, brilliant people all over the place, we still don't know what the hell to do, simply because virus is outsmarting us completely. So obviously the source of creation did not pay less attention to the virus than it paid to making you. When this is the nature of creation, who are you to decide what is worth paying attention, what is not worth paying attention?
Yeah. So Sadhguru, do you think that virus has an equal claim on the life and on this earth and we are sulking as a humankind far too much, and virus has an equal claim on the earth? Is it something which we should be looking at with equal. वायरस के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके पहले अटेंशन वाला जो है, सही में भाई मैं बता रहा हूँ, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है ना उस पर अटेंशन देने का मन नहीं करता है. ये प्रिजुडिस अटेंशन जो हम लोगों का है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम. Equal right a virus enjoys to live here, or is it how does one see, is it an enemy, or is it how does because humanity sees it as an enemy? And what I'm hearing from you is that virus is coexistence with us, and so as everyone, everything, every living being. So what should be a response to as an enemy or as a co-inhabitor? What is it? See, right now ये क्वेश्चन पैदा नहीं होता अगर गुरुजी ने वायरस को मेंशन नहीं किया होता, लेकिन अब वायरस आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया. क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, अभी वायरस को हम लोग के साथ कंपेयर कर दिया गया ना, तो ये तो डेफिनेटली हम लोग को लगेगा भाई वायरस एक छोटा जो दिखता भी नहीं हम लोग के साथ क्यों. एक गुरुजी का कंपैरिजन ऐसा है ना, आप देखते हैं वो एक ब्लेड ऑफ ग्रास से कंपेयर कर, एक जो पौधा ब्लेड ऑफ ग्रास समझ लीजिए, अब उसमें भी ज़बरदस्त अटेंशन. तो हम लोग कभी प्रोग्राम किए थे तो हम लोग को पता था. हम लोग प्रोग्राम का डिटेल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग को अटेंशन देना सिखाया जाता है हर छोटे से छोटे चीज़ के लिए, ठीक है. तो या छोटा पौधा हो गया या फिर ब्लेड ऑफ ग्रास हो गया, उसको देखते रहो. लेकिन हम लोग मैंने जब देखा ना तो सही में एक 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 लीफ में उसके अंदर का जो सर्कुलेशन है किस तरह से माने बारीकी से वो सब जगह फैला हुआ है ना. आप उसको अगर देखेंगे, उसका डिटेल देखेंगे ना, वाह क्या बेहतरीन डिज़ाइन है भाई. आप एक मधुमक्खी के छाते को देखेंगे, वैसा तो कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता छाता जैसा मधुमक्खी का छाता होता है. बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, ठीक है. तो क्रिएटर ने बनाने के समय किसी में कम अटेंशन नहीं दिया, सबको माने बराबर का दिया. बस हम ही लोग में है कि हम लोग सोचते कि ये ऊपर है ये नीचे है, ये ख़राब है अच्छा है. ये डिस्क्रिमिनेटरी सर्वाइवल के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग का इनर बीइंग जो है अल्टीमेट नेचर है उसके लिए नहीं. in this body, if you go by the number, that is the number of cells that you have and the number of bacteria and virus that you have within you, 52% of your body is actually microorganisms. I'm saying your parentage, your genetics and who you are doesn't exist. In majority, if you go for an election, they win straight away even within this body. Yeah. So, anyway, today we have chosen to be democratic. That means they definitely are more significant, not just on the planet, in this body also. If you take a planetary situation, they outnumber us millions of times or trillions of times, there's no question about that. So our existence is impossible without them, but their existence goes on well without us, there's no question about this. They were here before us, they will be here after us. So we came now, do we have to coexist? There is simply no other way. If you do not have enough bacteria and virus in this body, you cannot exist. In fact, many of the scientific studies are now saying the development of mammalian life on this planet was seriously influenced by virus about 100 million years ago, that mammals which are primitive… अरे रुको यार, क्या भाई, हमारा लाइफ का कोई अहमियत नहीं है? गुरुजी बोल रहे इफ ह्यूमन डिसअपियर फ्रॉम दिस प्लानेट द प्लानेट विल फ्लरिश. कहने मतलब ये प्लानेट बहुत अच्छा हो जाएगा. अरे भाई
मैंने क्या किया ना, अब मैं यूट्यूब में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्राय सोशली कट आउट कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे भी लार्ज स्केल में देना है। इसको रख देता हूँ ताकि अपलोड हो जाएगा ना, तो कोई भी देख लेगा, कोई भी सुन लेगा जब सुनना मन करेगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग अभी जो हो रहा है भाई, हम लोग का लाइफ तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं इस प्लानिट के लिए, पाने के लिए। जबकि वो छोटा वायरस जो बदमाशी कर रहा है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हम लोग से भाई। अरे बाप रे बाप, ये तो हम लोगों को पता नहीं था, है ना। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन इन लोगों से हो सकता है, क्योंकि हम लोग के शरीर में वायरस और बैक्टीरिया से भरा हुआ है भाई। टट्टी माने अपना खाना पचने के लिए भी उसमें बैक्टीरिया चाहिए होता है। एक बदमाश बैक्टीरिया एच पायरोरी बोल के उसका नाम है, अगर वो अंदर आ गया तो वो बदमाशी करेगा, पचने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जितने भी लैक्टोबैसिलाई वगैरह हैं जो हम लोग दही में खाते हैं, वो तो अच्छा बैक्टीरिया है। शरीर का जो पेट का जो एटमॉस्फेयर है वो बैक्टीरिया बताता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई कोई पेशेंट को अगर एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है, वो उसको डायरिया से शुरू हो जाता है डबल स्टेप। मान लीजिए बैक्टीरिया गायब, तो आप डायरिया कर रहे हैं दिन भर। एंटीबायोटिक से जब मरता है बैक्टीरिया तब आपको डायरिया आ जाता है दिन भर। तो आप सोचिए कितना सिग्निफिकेंट है ये इन लोगों का जीना हम लोगों के लिए। समझ रहे हैं ना। बाप रे बाप, क्या बात Mammals बोली है developed जनाब। the अब तो ability हमारा to बुझात नहीं generate कि क्या करेगा भैया। placenta in the body, which is the main source of being able to bear a full-formed child within the mother's womb. So, virus has been playing significant role in every day of our life. Today we got a virus from another place, that is, they were inhabiting other animals for a long time, forever probably. But now it jumped to us. Why? Maybe there are not enough of those animals, so they're looking for new terrain. So even now, even with this virus, it is only killing those people. Virus has no intention to kill. Virus wants to live and the habitat is you. But it lives with such vigor, we don't have enough vigor to withstand that. So even now, it is killing only those vulnerable sections of population largely, because wherever immune system is not good enough, it's going down. As a generation of people in modern life, the way we are today, living in cities, living in always on paved surfaces, not being connected to the earth, our immune system, if you look at people who lived here 200 years ago, who tilled the land, सही में भाई साहब, अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मैं बहुत दिन हो गया खाली पाँव चला नहीं हूँ। जब ईसा योगा सेंटर में हम जाते थे ना, टोटल खाली पाँव चलना रहता था। इतना मस्त ना आपको फील होता है, पाँव में लगता है कि एनर्जी घुस रहा है। माने इतना, माने आपका आँख अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी बीमारी का माने उसमें इलाज है। ऑटोइम्यून बीमारी से नहीं होंगे। तो चप्पल तो बीमारी है एक्चुअली, सिंथेटिक चीज़ है वो। who were constantly in contact with the soil, to those people and our immune system, I would say safely we are 50% less than what they were in terms of एक भी नहीं मरा immunity. हुआ You भाई will ईसा see योगा this सेंटर right का। now, all these migrants, these millions of people have gone from Mumbai, Delhi and everywhere, literally from all over the urban centers to villages. But you will see in the villages such a wave of killing will not happen with this virus, because generally people who are working with the soil, their immunity is way higher than the city people. But Sadhguru, this sounds a very ruthless argument of survival to me, because survival of the fittest. And when we come to a compassionate world where even the weak should survive, and that's what the human civilization has been all about. That is why we are doing lockdown, isn't it? Yeah, but at the same time, if we consider virus something which is surviving with us or not an enemy of us, but all said and done, the human civilization we have created is created on compassion, on the fact that the weaker sections of our society, weaker people, even they are older people, the emotion of people survive, not necessarily the. गुरु जी अब पकड़ में आया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम करता ना कहीं उस आदमी से रिलेटेड रहता है उसका सिनारियो। आप अगर ठीक से ध्यान से सुने ना तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होता है। अब जैसे मान लीजिए वो
अपने आप को एड्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब मैं वीकर सेक्शन बोल रहा हूँ। क्योंकि आप बेसिकली देखें ना, ग्राम में जाके देखिए, बहुत आदमी कम, अगर उसका कोई बीमारी नहीं हो ना, जैसे मेरे ससुर जी हैं, वो फार्मर है, वो वहाँ पर भी एक गांव है, मैं बाद में वीडियो ब्लॉग कर लूँगा उसमें। अरे बाप रे बाप, ये लोग वायरस को पचा रहे, और उधर इनका एज 70 है, ड्रिंकिंग भी चलता है, ठीक है, लेकिन सॉइल में काम करने की वजह से इनका इनर स्ट्रेंथ ऐसा है। 70 साल हो गया, 2-2 टेबल एक हाथ में उठा लेते भाई। वो गांव के आदमी 99% उसी तरह से काम करते और बहुत ही स्टैमिना वाले। Bodies. We were not interested in the fit bodies to be surviving. We were even considerate to people who were disabled. And we have to create a system which protects everyone around us. And that's the reason maybe we are so much in awe of people who have gone out and actually risk their lives for other people. And so Sadhguru, do you think that we will, if we talk about human civilization, we have come to a juncture where we'll have to actually truly decide which way we want to go from here, because these protected lives are also part of our master plan, that we are protecting each other, not necessarily the bare plan which used to be survival of the fittest in the jungle, where if you I was reading somewhere that the femur bone, when and that was circulating in social media quite a lot, that when people who couldn't walk started surviving, is when the human civilization had a turning point. Because before that, people who couldn't walk or for some reason are limping will be eaten by the predators. And the moment they started healing means somebody was taking care of them. And taking care of others became the basic nature of human civilization. So do you think from here, are we going to a more ruthless world where the fittest and more immunity, the people who have got more immunity will survive, and the ones we can't face it will finish off? But that's not the world we envisaged. That's not the human civilization we talked about. No, that is not at all what I was saying, Prasoon. What I'm saying is, nature or creation out of its magnanimity has given a certain sense of individuality or individual experience in our lives. But life doesn't happen as individual, life is happening as one whole. I'm saying this, without the participation of bacteria and virus, there is no such thing as human life. What I'm saying is, without us, they live well. Without them, there is no way for us to live. So, our idea of individuality, we have taken it too seriously. This is our problem. So slowly we are becoming such glass bubbles that we are becoming devoid of life. All we have is our own thought and emotion. Our thought and emotion is a luxury when life is happening well. This is a luxury that creation has allowed us. First of all, the great luxury and magnanimity is, though we are nothing in this universe in terms of size and value and whatever in this cosmos, in spite of that, we have an individual experience. We can sit here and experience ourselves as individual self, which is not a small thing, it's a tremendous thing. It is out of that all this thought… बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट व्यूअर्स लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि गुरु जी का जो आंसर है वो क्वेश्चन से रिलेवेंट ही नहीं है। अब ये क्या पूछ रहे हैं और वो आंसर क्या दे रहे हैं, तो इस तरह का फिनोमेना होता है। लेकिन आप और डीपर देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चनर को अंदर से एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, रादर देन द सुपरफिशियल क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये एनालाइज किया है। लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा ब्रीज तो होता है, कभी ठीक से सुने नहीं होंगे क्वेश्चन, ये भी हो सकता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ब्रीज करना भी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि बाकी लोगों को नहीं लगेगी गुरुजी को
आंसर देना नहीं आता है, ठीक है। तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किस तरह से आंसर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सुनते हैं ये अभी यहाँ पर एक्चुअल फ्रेम ऑफ क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अब प्रसून जी को क्या प्रॉब्लम हुआ था इस क्वेश्चन में कि जब गुरुजी ने कहा कि जो सॉइल से टच में थे, ठीक है, वो अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे, तो इसीलिए प्रसून जी गए और बताएं कि क्या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होना चाहिए, जो सिटी में उन लोगों को सर्वाइवल नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी ने उसका आंसर एक्चुअली दे चुका था कि इसीलिए तो लॉकडाउन है, ठीक है, इसीलिए तो लॉकडाउन है। तो उसका आंसर उसी में कंप्लीट हो जाएगा, एक सेंटेंस में कंप्लीट हो गया उसका आंसर, ठीक है। और फर्दर उसको और डिटेल में बता रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन बेसिकली डिटेल होता है बहुत, वो सिर्फ उनका क्वेश्चन को ही नहीं कवर करता है, वो बाकी व्यूअर्स का क्वेश्चन को भी कवर करता है, समझ गए ना। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक बता रहा हूँ कि आप वीक, अब गवर्नमेंट को भी पता चला कि ये तो वीकर सेक्शन है, गांव वाले आदमी तो सर्वाइव कर देंगे, ये लोग तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इस वायरस को। तो उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन करवा दिया, घर में बैठिए, आप बीमार है तो और भी घर में बैठिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुआ, ठीक है। उसका आंसर यही था, सबको बचने का राज यही है कि घर में बैठिए आप। तो ये एक चीज़ है। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप एक डरपोक इंसान की तरह रहना चाहते हैं या फिर एक बिंदास आदमी की तरह। तो मैं कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बोलूँगा कि मैं वीक भी हूँ तो सर्वाइव करूँ। मैं ये चाहूँगा कि क्या तरीका है जहाँ से मैं इतना स्ट्रेंथ ले लूँ कि कोई भी वायरस को मैं आराम से पार कर जाऊँ। ये वायरस से मैं भी इन्फेक्टेड हुआ था, सभी लोग, आप ईसा के जितने भी देखेंगे जो भी वॉलंटियर्स वगैरह थे, वो लोग वायरस के बीच में गांव-गांव में जाके खाना दे रहे थे। वो लोग चाहते तो लॉकडाउन कर सकते थे, लेकिन क्यों एक्टिव थे, क्यों डर नहीं था उनके अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि हमारा बॉडी जो है इतना स्ट्रेंथ हम लोगों ने बना दिया है योगा करके कि वो निकाल लेगा। तो ईसा में कोई डेथ नहीं था, आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल डेटा पे, क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा कि डेथ नहीं था। मैंने इसको अंदर से वेरीफाई नहीं किया, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। डेथ इसलिए नहीं था क्योंकि ज़्यादातर वो लोग फिजिकली फिट, और ये एडवर्टीजमेंट भी एक तरह से कि ये हिसाब से काम कर रहा है। और एक ही ऐसा योगा है पूरे इंडिया में, ट्रेडिशनल योगा, सिर्फ हट्टा योगा जो ईसा सेंटर में सिखाया जाता है, दैट इज़ द रियल मशीन। क्योंकि मेरा भी इम्यून उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये वायरस आया, हाँ 1-2 दिन बुखार तो बहुत ज़बरदस्त आया था, खाना भी वॉमिटिंग हो रहा था, सब कुछ निकल रहा था, लेकिन एनर्जी जो था काफ़ी पीक कर रहा था। तब मैंने रियलाइज़ किया भाई एनर्जी का चक्कर अलग है, शरीर जाए भाड़ में, एनर्जी ब्लिस में जा रहा है भाई। ये कोविड का ही टाइम था जब मैंने खुद रियलाइज़ किया कि भाई एनर्जी इतना ब्लिसफुल क्यों है, बॉडी तो वॉमिट कर रहा है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी क्या फील कर रहे हो। हम लोग लगता है वो बुखार चढ़ा हुआ है 103 में और वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ओनली रीज़न इज़ एनर्जी। एनर्जी ब्लिसफुल है, उनको टान रहा है, कोई भी एंगल से शरीर का कोई भी हतर पत्र हो उससे कोई मतलब नहीं। दिस आर 2-3 डिफरेंट थिंग्स। अब अगर ये मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं इसको बता ही नहीं पाता, विस्तार नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। Motion, philosophy, civilization, everything. Having said that, now people are, in… अगर कोई ईसा से है तो उससे आप ये बात वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। आप 4 आत मेडिटेटर से जाके पूछ सकते हैं कि आपको जो बुखार लग रहा था तो आपका एनर्जी का क्या सिचुएशन था। बुखार लग के शरीर हाल ख़राब, पेट दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग सब कुछ हो रहा है, नाक में खाना में, मुंह में कोई टेस्ट नहीं, लेकिन साला एनर्जी ऊपर जा रहा था, ठीक है, सॉरी फॉर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, लेकिन ऐसा हो रहा था। Different countries, they're proposing different kinds of philosophies. Somebody, in United States, they're saying we have the freedom to have haircut. We don't like this lockdown, we want to have haircut, so we will go out. So we'll go out with guns and have haircut. In India, you saw they opened the liquor shops in Delhi and other places, you know what happened. So,
These people are now throwing scientific language at you and say the only way out is herd immunity. Herd immunity means 70%, 60 to 70% of the population should get the infection, only then herd immunity will happen. Herd, the very word herd I don't like with reference to human beings but they are looking for herd immunity. They are not talking science, they are pitching for their own compulsions. They can't sit at home, they want to go out, they want to drink, they want to have a haircut. So, if we go for herd immunity, we will wipe out the geriatric population. We will wipe out all those vulnerable segments of population. For some reason, their immune system is down. I was not talking about that. I am talking about the way we are forming life right now, the way we are living in the cities. We are living in such a way that our life itself, the very life breath is weak. If you live like that, every single virus that comes by in the next few decades or centuries, every one of them will threaten our existence. सिस्टम ही बहुत वीक है ना। गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि आप इतना स्ट्रेंथन कर लीजिए और सब कुछ तो ऑफर कर ही रहे हैं भाई। 3,000 4,000 खर्चा करके आदमी इन्हें जिन्हें नहीं कर पा रहा है। हट्टा योगा 5 दिन का प्रोग्राम होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 दिन का हट्टा योगा कीजिए, आपका लाइफ सेटल। अंगा मर्दना ही इतना पावरफुल है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अंगा मर्दना ही अगर आप अंगा मर्दना सूर्य क्रिया, ये दो बवाल चीज़ें, ठीक है। अगर ये दो आप करेंगे, सिम्हा क्रिया तो फ्री कर दिया गया था बीच में ना, अगर ये दो सिर्फ करेंगे और ईसा क्रिया भी कर लीजिए थोड़ा सा, और संभव भी आपको जब आपको भरोसा हो जाएगा ना इसमें, आप देखेंगे ज़िंदगी भर आपको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस तो होगा नहीं, होएगा नहीं। एक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का पेशेंट था, वो हट्टा योगा की वजह से ठीक भी हो गया, और एक SLE के पेशेंट थी, वो भी ठीक हुई, वो अभी स्टेरॉइड्स नहीं ले रही, स्टेरॉइड्स ऑफ, ठीक है। तो हमें तरीका खोजना है। जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो। अब इसमें भी आदमी लोग इतना क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, 3-4 हज़ार 5,000 करके खर्चा करके 5 दिन आप चाहिए, खाना भी मिलता है, सब कुछ होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और एडवांस प्रोग्राम तो मैंने 3,000 कितने में अप्लाई किया था, शून्य वगैरह, ठीक है। तो एग्जैक्ट रेट अभी का मुझे प्रेजेंट का भी पता नहीं है, आप देख लीजिए। ये भी बेसिकली अकोमोडेशन, थोड़ा बहुत खाना वाना तो कहाँ से बनेगा भाई, है ना। 4-5 हज़ार रुपया आप क्या तो एक मॉल में जाके खाना खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा एक बार में, है ना। तो आप ये अब इन्वेस्ट कीजिए, अपना बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि अगला वायरस भी आ गया तो भी हम आराम से लड़ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। शरीर मेरा फिट है, ना डायबिटीज़ होगा ना कुछ होगा, ये इतना मेरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा शरीर में चीज़ें। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, फिर लीवर फंक्शन टेस्ट डिसफंक्शन था, फैटी लीवर डिजीज था, ठीक है, जिसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी शुरू किया था। मैंने जब ज्वाइन किया ये करने के बाद, मेरी वाइफ सरप्राइज़ हो गई, भाई अरे बाप रे बाप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन उसको क्या था कि उसको 2 घंटा नहीं देना था अपने लाइफ में, तो अभी तक भी वो फिट नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, घर का पूरा काम ऊपर से नीचे मैं सब कुछ कर लेता हूँ, उस इस वजह से भी हो, है ना। लेकिन फ्यूचर में था कि था डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, मैं बोल देता हूँ, एक बार बोल देता हूँ, करना नहीं करना आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं। This is because we've lost connection with how life happens. Life doesn't happen just here, life is happening all around. You need to imbibe it all the time. Otherwise, your life is of no substance, it will go away. Sadhguru, this constant struggle with nature, and please you can throw light on this. This constant going loggerheads with nature is something which I probably feel was not part of at least Indian culture, where I grew up in Uttarakhand, and in the mountains I was born, and my childhood I've been there, I lived there. I never competed with the river. I bowed down to the river. I was never, in fact, I did not even know that adventure sport will become such a big thing later on, and I would see it, whitewater rafting and stuff like that. When I go to Rishikesh today, I see that. But in my childhood, I saw more befriending the nature, more bowing down to nature, more taking orders from.
यहाँ पर क्या हो रहा है ना, क्लटरिंग हो रहा है, क्लटरिंग ऑफ थॉट एंड शिफ्टिंग ऑफ टॉपिक। देखिए, क्योंकि आपको अगर आंसर किसी चीज़ का चाहिए, जब तक आपको आंसर नहीं मिलता है तब तक आपको पूछते रहना चाहिए, आप शिफ्ट ना करें। इसका मतलब आप जेन्युइनली अगर जानना चाहते हैं तो उसके अंदर आप और जाइए, जहाँ तक आपको समझ नहीं होता है वहाँ तक आपको गुरुजी बताएंगे। The nature, and when the sun is down is the time to sleep. There was certain respect and rhythm with which we were brought up. Where did we go, getting into conquering nature, and where did human civilization start competing with nature? When did this happen? Well, in 1947, when the British left, our brains also went away with them. देखिए, ये क्वेश्चन में इतना दम नहीं था क्योंकि देखिए, आप अब एक 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 जगह को कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे। पृथ्वी में बहुत सारा जगह है, और यहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ ये लोग इतना पंक्चुअल हैं, 6 बजे का खाना ख़त्म हो जाता है 90% ऑफ द घर में भाई। 6 से 7 बजे का खाना, 7 बजे के बाद तो भाई, अरे खाना नहीं खाया अभी तक, शाम का 7 बजे। अब हम लोग के घर में क्या होता है, 10 बजे खाना नहीं परोस रहे हैं, 10 बजे खाओ, 11 बजे सो जाओ, वो खाना पचा भी नहीं, वो पेट इतना बड़ा बड़ा निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एक कॉन्टेक्चुअल अब गायब हो गया, नेचर से रिदम गायब हो गया। तो वो एक्चुअली गायब नहीं हुआ है, हम लोग को लगता है कि कोई जगह है, क्योंकि अभी नाइट लाइफ शुरू हुआ, आदमी लोग नाइट को एंजॉय करना चाहते हैं। अब देखिए, ज़्यादातर आदमी लोग डे टाइम को स्ट्रेसफुली मानते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन चाहिए होता है, बस यही, और कुछ नहीं। So now whatever comes from there, that's what we do. So this whole, brutal way of producing things. Well, yesterday I was talking to somebody from Manchester, so I was telling him, you are the guys who started this whole business of mass production. And for this mass production, you started mass production schools. All you have is nuts and bolts. Half of them are nuts, half of them are bolts. देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्वेश्चनर कम से कम लाखों क्वेश्चन पिच किया होगा गुरुजी को, ठीक है। एक क्वालिटी गुरुजी का एक बहुत अच्छा चीज़ है, जब आप लोग अगर सीख भी जाएंगे, मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलता है उस क्वालिटी से, कि मैं हर समय गुरुजी का क्वालिटी को ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, मेरा अटेंशन उस पर ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप, इन्होंने कहा भी है, आप उनको पत्थर दे दें, वो फूल बना के फेंक देंगे आपको ऊपर। तो वो अपने आप को ऐसा बनानी है कि पत्थर जहर कुछ भी आ जाए ना उनके शरीर में, वो अच्छा ही बन के निकलेगा है ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो उनको पहले से पता चल जाएगा ये इरेलेवेंट है, ये क्वेश्चन इसमें कोई दम नहीं है, वो थोड़ा सा हंस देते हैं ना, तो आपको उसी समय पकड़ लेना चाहिए कि हाँ, ये बेकार का क्वेश्चन सब है, इसमें कोई दम नहीं। लेकिन उस क्वेश्चन को बेकार नहीं लेते हैं, उस ख़राब क्वेश्चन को भी उतना ही अटेंशन देते हैं, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से बना के आंसर दिया जाए ताकि इसका आंसर भी सॉल्व हो जाए। हाँ, और बाकी आदमी लोग जो सुन रहे हैं, उतने करोड़ों आदमी सुन रहे हैं, हज़ारों आदमी सुन रहे हैं, लाखों में सुन रहे हैं, उन लोगों का रिलेवेंट क्वेश्चन भी आंसर हो जाए। बहुत सारा, माने वो जो थीसिस रिस्पॉन्स, भाई बाप रे बाप, भाई सलाम 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 सलाम। क्योंकि ज़्यादातर आदमी लोग ध्यान दे के नहीं सुनते हैं, हड़बड़ी में सुनते हैं, और मैं शांति से सुनता हूँ उनको जब फ्री हो जाता हूँ। अभी देखिए, कोई हल्ला नहीं है, सब लोग सो गए, तो इस समय क्या होता है कि शांति से मैं काम कर सकता हूँ। They of course fit into the economic engine somewhere and they're useful, but what ठीक है, kind… अभी यहीं तक ख़त्म करते हैं, उसके बाद आप और कंटिन्यूस चाहिए तो कम से कम 20 लाइव करिए, और 20 लाइक सिर्फ, उसके बाद ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता जाएगा तो और मैं वीडियोस बनाता जाऊँ, क्योंकि मुझे लगे कि आदमी लोग मैं बना रहा हूँ, कोई सुन रहा है, उसके लिए एक्चुअली वो टाइप का आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी और फिर भी मैं इसलिए इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, यूट्यूब में हर समय ज़िंदा रह जाता है ना, सालों साल तक चलेगा ये।
कहीं ना कहीं किसी न किसी को कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, इसी चीज़ के लिए, और कुछ नहीं। लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कोई मतलब नहीं बनता उसका। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।